Good evening. Good evening. Good morning. Good afternoon to the esteemed viewers from across the globe. I am Satinder Kaur from Jalandhar, Punjab, a retired associate professor and head PG Department of English, Kanya Mahavidyalaya, Jalandhar, Punjab. Today, I am before you with some of my poems written in English, Hindi, as well as Punjabi. So, as a teacher, I have been teaching to the students so many poems from the Indian poets or British poets or American poets, but I myself started writing only a few years ago. So, it is the medium. Poet becomes a poet when he starts expressing his emotions and feelings through his words. So, just as an architect makes the whole design of a building, similarly, a poet selects the words or the expression, the experiences which he has, and then he weaves those experiences or emotions or feelings or thoughts into his words, and then he gives birth to a poem. So I am also here before you with some of my poems in English, Hindi, and Punjabi. But before I start, I would like to express my deep sense of gratitude to Dr. Rupali Sirkar, Prasanna Kumarji, and the whole brilliant team of the Fertile Brains uh, for giving me this opportunity to express myself, my thoughts, my feelings before you in the form of my poems. And whenever the readers are there, or viewers are there, listeners are there, they also, I hope, will connect with the thoughts which I have expressed in my poems. So, the first poem which I will recite before you is dedicated to my father. The title is A Tribute to My Dad, as I owe to him whatever I have achieved till today. So the poem goes like this. A tribute to my dad. Thoroughly gentle, with a benign personality, calm and composed, contented and blessed, a legend for the times, he was my dad. A legend for the times, he was my dad. Like a huge banyan tree with strong leafy branches outspread, like a huge banyan tree with strong leafy branches outspread, he protected us from the malaise of the evils of the corrupt world. Trusted on a high official status, he remained completely grounded. Trusted on a high official status, he remained completely grounded. Generosity and kindness, his inherent virtues, with far-sighted vision and loyalty suffused. Well known for his saintly stature and benevolent smile, well known for his saintly stature and benevolent smile, the fragrance of which extended up to long miles. People cherished him
for his sagacious nature, his scholarly insight and decisions mature. A simple man with honesty and integrity, shaping the future of his wards was his priority. With children as his biggest assets, never did he think that progress meant an increase of property. A man of principles, true to his word. A man of principles, true to his word. This is how he is known to the world. This is how he is known to the world. Blessed am I to be born as his daughter. Blessed am I to be born as his daughter. Grateful to him for providing me with fun and laughter. I have been enriched with so many boons. O God, why did you take him so soon? O God, why did you take him so soon? So this is my tribute to my father, who was a far-sighted person and an Indian scholar to an American university in those times. The next poem is about the social evil where the girls are considered to be a burden to the family. Most probably that when she is to be married, dowry has to be given, and what type of people, family she will get into. So there is a worry in the parents, and sometimes they don't want the daughters to be in their families. And the poem before you is titled From Womb to Earth, in which I have given a voice to a female fetus who has heard the conversation between her mom and dad and learns how her dad is pressurizing his frightened wife to get this third girl child aborted because they have already got two daughters. So this poem serves as an awakening call for the patriarchal society to change their mindset and to think of giving equal rights to boys and girls. So, my next poem is From Womb to Earth. Mom's painful, sighing steps, heavily heading the very path towards the nursing home, heavily heading the very path towards the nursing home. The invisible eyes of the embryo could see. The invisible eyes of the embryo could see. Nursing home or slaughterhouse? Doctors, the saviors or murderers? Sadly, last night she had overheard the heated arguments between mom and dad. Dad, a richly poor man, not in a mood to spend his riches on the third unfortunate daughter. Now the conversation begins. Dad, how could you be so heartless? Dad, how could you be so heartless? Mom's silent tears were so helpless. Can you imagine how excited I was to receive and to give my unconditional love to mom and sisters and to you more than everyone else, making you proud each day with small achievements and later learning to fly high like Kalpana Chawla or like Mithali or Mary Kom reigning over the sports kingdom, or like mom
living in your heart like a queen, like mom, living in your heart like a queen. Dad, why do you forget? Your mom and my mom were once unborn daughters, brought into the world to prove their mettle. Please let me complete my journey from womb to earth. Please let me complete my journey from womb to earth, do my duties by home and hearth, embrace my mom with great aplomb to let me leave another milestone. Embrace my mom with great aplomb to let me leave another milestone. So this was my second poem on the on the issue on the social evil where girls are not considered worth taking birth. The next poem I'll recite before you is in Hindi, and that poem is on life. On life. My favorite themes are life, love, relationships, and time, etc. So the next poem is in Hindi and it is on life. जिंदगी की तेज भागम भाग, कभी कंटीली धूप तो कभी ठंडी छांव, कभी जीत का नशा तो कभी नुकीली धारदार हार, सब कुछ संभालते संभालते थकी हुई मैं, कुछ पल बिताने की चाह खुद के साथ, सब कुछ संभालते संभालते थकी हुई मैं, कुछ पल बिताने की चाह खुद के साथ, लड़खड़ाते कदम समुद्र का किनारा, लड़खड़ाते कदम समुद्र का किनारा, अकेली एक कोने में रेत की चादर पर सिमटी मैं, हाथ सर पे, सर घुटनों पर, कुछ ना देखूं ना बोलूं ना सुनूं की मनोस्थिति में, कुछ ना देखूं ना बोलूं ना सुनूं की मनोस्थिति में, अचानक मेरी गर्दन के आसपास प्यार से भीगी कोमल बाहों का एहसास, और कानों में गूंजी एक मधुर आवाज, और कानों में गूंजी एक मधुर आवाज, कहाँ से आई? क्या ये थी मेरे भीतर की आवाज? क्या ये थी मेरे भीतर की आवाज? तो आवाज क्या कह रही है? उठो, देखो कुदरत का दृश्य, उठो देखो कुदरत का दृश्य, सीखो कुछ इन लहरों से, सीखो कुछ इन लहरों से जो सफेद मुकुट पहने बहती हैं सदा, बर्फ से लदे पहाड़ों की तरह खुददार अंदाज। सीखो कुछ इन लहरों से जो सफेद मुकुट पहने बहती हैं सदा, बर्फ से लदे पहाड़ों की तरह खुददार अंदाज, बेपरवाह हर रुकावट को लांघती, अनथक हर चुनौती से जूझती। तुम भी उठो, योद्धा बनो, तुम भी उठो, योद्धा बनो, ठान लो, हार नहीं मानोगी जीवन संग्राम से, ठान लो, हार नहीं मानोगी जीवन संग्राम से। वक्त के घूमते पहिए में जो हार थी वो बीता कल था, वक्त के घूमते पहिए में जो हार थी वो बीता कल था, सफलता मिलेगी आने वाले कल, सूरज की तपिश थी बीते हुए कल में, तो चांद की ठंडक भी होगी आने वाले कल।
तो चांद की ठंडक भी होगी आने वाले कल। तो ये था जिंदगी के बारे में कि कैसे हम लोगों को चुनौतियों का सामना करना है, हार नहीं माननी है, और अगर कहीं असफलता आ गई तो उससे डर कर बैठ नहीं जाना है, आगे चलना है और मुसीबत से लड़ना है। तो एक और कविता जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ, वो है रिश्तों के बारे में। तो उसको मैंने टाइटल दिया है रिश्तों की किताब। तो किस किस तरह से रिश्ते हैं और किस तरह से अ, उम्मीदें रखी जाती हैं कुछ खास रिश्तों की तरफ से, तो उसके बारे में ये कविता है। रिश्तों की किताब। रिश्तों की किताब मैं खोलती हूँ तो क्या पाती हूँ, तो क्या पाती हूँ। कुछ पन्ने मुड़े हुए तो कुछ फटे हुए, कुछ पन्ने उड़ते हुए वक्त की आंधी में, कुछ पन्ने उड़ते हुए वक्त की आंधी में। ये बेशकीमती किताब लिखते हुए पढ़ते हुए निकले कितने साल इसे सहेजते हुए, निकले कितने साल इसे सहेजते हुए। उड़े हुए पन्नों को सीधा करते हुए मैं पहुंचती हूँ अतीत में। उड़े हुए पन्नों को सीधा करते हुए मैं पहुंचती हूँ अतीत में। देखती हूँ अपने आप को एक पत्नी, एक बहू, एक माँ, एक कामकाजी औरत के रूप में। एक पत्नी, एक बहू, एक माँ, एक कामकाजी औरत के रूप में। बहुत सी भूमिकाएं और सभी को मुझसे ढेरों आशाएं। बहुत सी भूमिकाएं और सभी को मेरे से बहुत सी ढेरों सी आशाएं। हंसते हंसते बिना किसी शिकायत के, बिना किसी आशा रखे, बिना किसी से आशा रखे सभी फर्ज निभाए। कभी सराहना मिली तो कभी ताड़ना, कभी सराहना मिली तो कभी ताड़ना। बच्चे, बड़े या फिर बॉस, जिंदगी की दौड़ दौड़ती रही मैं, रखते हुए सब में बैलेंस। जिंदगी की दौड़ दौड़ती रही मैं, रखते हुए सब में बैलेंस। पर मुड़े हुए, फटे हुए और उड़ते हुए पन्ने मुझे ये याद दिलाते हैं, मुझे ये याद दिलाते हैं कि रिश्ते सहेजते सहेजते भी कुछ पल ऐसे आते हैं जब वक्त की आंधी अपने गरूर में बहती है, जब वक्त की आंधी अपने गरूर में बहती है। धैर्य और संयम के बांध तोड़ते हुए इतराती है। धैर्य और संयम के बांध तोड़ते हुए इतराती है और छोड़ जाती है अपने आने का एहसास, और छोड़ जाती है अपने आने का एहसास। रिश्तों की किताब, कुछ पन्ने मुड़े हुए और कुछ फटे, कुछ पन्ने मुड़े हुए और कुछ फटे। तो ये थी मेरी कविता रिश्तों के ऊपर। जैसे कि एक औरत को कई रिश्ते निभाने पड़ते हैं, और कभी उसको सराहना मिलती है तो कभी उसको ताड़ना भी मिलती है। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस एक औरत की जिंदगी में आते हैं। तो उन्हीं एक्सपीरियंसेस को सामने रखते हुए मेरे मन में ये आया कि ऐसी एक कविता लिखी जाए। तो एक और कविता जो पंजाबी में मैंने लिखी है वो है
डिवाइन ग्रेस, भगवान की कृपा, और पंजाबी में रब्बी किरपा, रब्बी किरपा। तो रब ने सानू बहुत सारे आशीर्वाद दिते हुए ने, ते सानू उसका किस तरह धन्यवाद करना है। कितनी सुंदर साडे आम सामने कुदरत है, और उसने सानू बहुत कुछ दिता है, तो किस तरह से असी उसका धन्यवाद करना है। तो ये है इस कविता में रब्बी किरपा। तकदी हां मैं उपर, तकदी हां मैं उपर, करदी रब अगे अरदास, करदी रब अगे अरदास, चमक अखां विच, मन विच उम्मीद भर के, चमक अखां विच, मन विच उम्मीद भर के, आंदरा सुक्की धरती दियां बुलबुला रहियां, फुल मुरझाए ते पत्ते सन सिर झुकाए हुए, फुल मुरझाए ते पत्ते सन सिर झुकाए हुए, अग दा गोला झुलसिया घाह, बच्चे परेशान छुपदे मां दे लीड़ियां विच, बच्चे परेशान छुपदे मां दे लीड़ियां विच, पंछियां सिर सुट्टे, जानवर दुबके व्याकुल होके, जानवर दुबके व्याकुल होके। फिर अचानक वगियां हवावां तेज, वगियां हवावां तेज, स्नेहा परमात्मा नू जल्द पहुंचाण दे लई, स्नेहा परमात्मा नू जल्द पहुंचाण दे लई। जरा देखो तो, जरा देखो तो ये चमत्कार, तोहफा अंबरां तो पहुंचिया, चिरी धरती दी हिक ते, तोहफा अंबरां तो पहुंचिया, चिरी धरती दी हिक ते, बड़े अदब नाल मिट्टी नू साफ करदा, शुरू नरमी नाल ते फिर तेज बौछार, गलियां बदलियां वल खांदे दरियावां विच, गलियां बदलियां वल खांदे दरियावां विच, बच्चे खुशी नाल पानी विच मारन छालां, बच्चे खुशी नाल पानी विच मारन छालां, किश्तियां कागज दियां मुकाबले विच लाउण दौड़ां, यादां ताजियां कर शामिल मैं भी हो गया मित्रां नाल, यादां ताजियां कर शामिल मैं भी हो गया मित्रां नाल, ठंडियां बौछारां विच बचपन फेर जी लवां, ठंडियां बौछारां विच बचपन फेर जी लवां, कुदरत दे इस हसीन रंग नू मैं फिर माना, कुदरत दे इस हसीन रंग मैं फिर माना, पानी विच छट्टे आस पास मारा, नच नच के मैं मनावा चा, किरपा रब दी रहे सुख शांति माना मैं, किरपा रब दी रहे सुख शांति माना मैं, मुस्कुरांदे फुल फुल के, पत्ते नचदे खुश हो के, मुस्कुरांदे फुल फुल के, पत्ते नचदे खुश हो के, कलोला करदे जानवर पंछी मिठे गीत गाउंदे, कलोला करदे जानवर पंछी मिठे गीत गाउंदे, शुकर मनाउंदे हर साह दे नाल, शुकर मनाउंदे हर साह दे नाल, जोश गर्मी दा हुण है घट होया, जोश गर्मी दा हुण है घट होया, जज्बा मनुखता दा मुड़ है जीवंत होया, जज्बा मनुखता दा मुड़ है जीवंत होया। ਤਾਂ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਸੀ ਰੱਬੀ ਕਿਰਪਾ, ਕਿ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਤੋਹਫੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹ ਤੋਹਫਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ। ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਕਵਿਤਾ ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗੀ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਹੈ।
ਤਾਂ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਮੜਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਕਦੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਕਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਔਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। तो उस तरह ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਟਲ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਘਬਰਾਹਟ ਤੇ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਾइंड अ कुरुक्षेत्र। माइंड अ कुरुक्षेत्र। where my mind a Kurukshetra, where every day a new Mahabharata takes place, where every day a new Mahabharata takes place, a battlefield for divergent thoughts, a battlefield for divergent thoughts, like the seas which are storm tossed, like the seas which are storm tossed. Satan's armies in veils of worries and despair. Satan's armies in veils of worries and despair rattle the fortress of my quietened soul, rattle the fortress of my quietened soul, blowing a tempestuous bugle of war, blowing a tempestuous bugle of war, tearing the walls of hope apart. They weave a tapestry of chaos and fear. They weave a tapestry of chaos and fear, challenging the spirit for a relentless war, challenging the spirit for a relentless war. Yet, deep in the stillness, a voice breaks the silence. Yet, deep in the stillness, a voice breaks the silence. An echo of love, an armor of faith gives birth to coveted resilience. An echo of love, an armor of faith. Excuse please. An armor of faith gives birth to coveted resilience. Incredible courage takes a big leap. Holding the hand of truth, dares to reclaim the bleeding mental landscape. This voice, a mesmerizing beacon of hope, grapples me with a mighty hold, grapples me with a mighty hold, uttering, stand firm in the storm, let the winds howl and rage. Stand firm in the storm, let the winds howl and rage, with God as your anchor, tear away the depressing bloodied page. Tear away the depressing bloodied page. In the kingdom of the mind, let the civil war cease. In the kingdom of the mind, let the civil war cease, and in the light of his grace, step forward and discover true peace. And in the light of his grace, step forward and discover true peace. So, this is the poem about the mind, which is like it is the mental landscape which I have presented before you, where conflicting ideas are always at war with one another, but still we can overcome those uh, those ideas which are harmful by making use of those which are positive. So positivity can overcome negativity. This is the message. And one last poem that is in Hindi, I am going to recite before you before taking your leave.
ये कविता है एजिंग के ऊपर। जैसे जवानी में सुंदरता है और धीरे धीरे टाइम के चलते चलते चेंजेस आने लगती हैं और जो सुंदरता है उसमें कमी होने लगती है या बाल सफेद होने लग जाते हैं, चेहरे पर झुर्रियां पड़नी शुरू हो जाती हैं। तो शीशे के सामने खड़े होकर एक पर्सन अपने आप को किस तरह से देखता है और किस तरह से पिछले कुछ सालों में कैसे था और अब क्या है, उन दोनों का जो कंट्रास्ट है वो इस कविता में मैंने दिखाने की कोशिश की है। और मैंने टाइटल दिया है मैं और मेरा शीशा। मैं और मेरा शीशा, दो अंतरंग दोस्त, बचपन से जवानी तक, चुगलबाजी, शरारत, प्यार, इन्हीं में उलझे रहे हम दोनों के किरदार। इन्हीं में उलझे रहे हम दोनों के किरदार। कितनी बार मैंने बेझिझक कह डाले थे तुमसे किससे अपने प्यार के, किसी पर इतबार के, जो कभी किसी से ना कह सके, जो कभी किसी से ना कह सके, वो सब तुम्हारे कानों में चुपके से कहती रही। तुमने मेरी हर खुशी, हर गम को गले से लगाया। तुमने मेरी हर खुशी, हर गम गले से लगाया। कभी मेरा आंसू भरा चेहरा दिखा, मुझे समझाया। जिंदगी से मिले गिले शिकवों को अपनाना सिखाया। मुझे मेरे गुरूर से ऊपर उठना सिखाया। लेकिन कुछ अरसे बाद, कुछ अरसे बाद, ना जाने क्यों तुम मुझे मेरा कौन सा रूप दिखाने लगे। ना जाने क्यों तुम मुझे मेरा कौन सा रूप दिखाने लगे। मेरी मुस्कुराहटों में भी तंज का रंग उभारने लगे। मेरे माथे की बिंदिया, आंखों का काजल, गालों की लाली, लंबे काले बालों के बादल, ना जाने कब बदलने लगे माथे की सिलवटों में, आंखों की उदासी में, चेहरे की आड़ी तिरछी लाइनों में और चांदी की धीमी चमक। अब तेरे मेरे ठहाकों की आवाज सुनने को तरसते हैं मेरे कान। अब तेरे मेरे ठहाकों की आवाज सुनने को तरसते हैं मेरे कान। मेरे सामने आते ही तुम तो मुंह ही फेर लेते हो। मेरे सामने आते ही तुम तो मुंह ही फेर लेते हो, जैसे कि अपनी चुप्पी से हौले से कहते हो। वक्त की धारा कभी रुकती नहीं किसी के लिए। वक्त की धारा कभी रुकती नहीं किसी के लिए। शिकवा मत करो, बस इसी में बहना सीख लो। शिकवा मत करो, बस इसी में बहना सीख लो। थैंक यू, थैंक यू all the viewers, and I hope you have liked my poems. See you again at some other time. Good evening, good night, good morning. Thank you.